I don't know, he just gives a list of jobs and I've got to go. So I'll see you next week. And I went out, I got all the jobs done he wanted done. I kept my mouth shut, I jumped in my car, I went home for the weekend. Now when you go home for the weekend and you go to war on the Monday, what do? You might never come back. You've got a mum and dad. So anyway, we'll leave that for the next session. I'd like to thank you. चलिए हम और आप देखते हैं कि हुकूमतों में बैठे सियासतदानों की बातें इतनी मुश्किल क्यों होती हैं। क्या हुकूमती वादे आम पाकिस्तानी के फहम से बालातर नहीं होते। देखिए पहली बार एक अवामी नुमाइंदे को अरबाबे इक़्तिदार से आपकी बात करते हुए। हजूरी बाग मुगलिया बागात की तर्ज में तामीर शुदा बागात में से एक है। ये मशरिक में किला लाहौर, मगरिब में बादशाही मस्जिद, शुमाल में रंजीत सिंह की समाधि और जनूब में रोशनाई दरवाजे तक फैला हुआ है। इस बाग के मरकज में हजूरी बाग बारादरी है जो रंजीत सिंह ने तामीर करवाई थी। हजूरी बाग दूसरे मुगलिया बागात की निस्बत एक छोटा सा बाग है जो आलमगीरी दरवाजे से बादशाही मस्जिद तक फैला हुआ है। ये बाग महाराजा रंजीत सिंह ने 1813 में तामीर करवाया था। ये बाग रंजीत सिंह ने मुगलिया तर्ज तामीर पर कोहे नूर हीरे की शाह शुजा से छीनने की खुशी में तामीर करवाया था। इससे पहले आलमगीरी सिरीनामी यादगार यहाँ वाक़ थी जिसे खत्म कर दिया गया था। इस बारादरी में इस्तेमाल होने वाला संगे मरमर और इससे तामीर शुदा इसके सतून नहायत दिलकशी से बनाए गए हैं। हजूरी बाग की इस मरकजी बारादरी जो रंजीत सिंह की अदालत हुआ करती थी की छत मुकम्मल तौर पर शीशे से तामीर की गई है। बारादरी और बाग तकरीबन 45 मुरब्बा फीट और तकरीबन 15 कदम फासले तक सिखों पर अंग्रेजों के हमलों में बर्बाद हो गई थी। इस हिस्से की तामीर नौ बरतानवी राज में इसी नक्शे पर की गई। 19 जुलाई 1932 को इस बारादरी की ऊपरी मंजिल मुनहदिम हो गई जो दोबारा तामीर ना की जा सकी।
Well, Terence South here again, nice to be back. You left me at home last time we spoke, and I'm going to war on the Monday, and I arrive home at the Friday night, 11 o'clock, and I can't tell anybody. What do you do? What do you do? Do you cry? Do you kiss your mother? Well, your head. It took me 10 hours to drive home. My head's doing this. What do I do? Do I leave my car there? If I leave my car at home, that means my mum doesn't have to come to get it if I die. She can just sell it. She doesn't have to go to the camp to where all the other wives and mothers to pick cars up and things up that belong to their sons. And your head is just scrambled. But remember, you stay physically fit. Just keep your eye on, this is what I've got to do. Don't let things get complicated. Just do what needs to be done. So there I'm home. I leaves, I goes and buys a watch. My mother's like, what are you buying a watch for? What you bought a Casio watch for? You've got a Rolex. You got Rolex for your 21st birthday. You bought it for yourself. You bought it with a credit card. Why have you bought a Casio? I was leaving my Rolex at home. I was not taking my Rolex to war. Put it in the box. Put it in the bedside cabinet. Put my Casio on. And that was where I was going to go with. I then bought some clothes. I actually went out and spent a lot of money on my credit card, to be honest. Because if I died, then it just got paid off by the insurance company. So I went out and spent some money, bought myself some nice clothes. And I finished with my girlfriend. And people couldn't believe it. And I was like, yeah. I finished with my girlfriend. Why? I didn't want anybody, should I die, something happening over my coffin. She hardly knew my mother. She didn't know my dad. She didn't know my brother. It was like everybody would say, who's this woman crying here? Who's she? She's only known my son for a year. We've known him 21. You know, so it was like, buff, girlfriend, gone. I went round to two friends and apologised. Said a few things. Look, I've come to make up. I'm really sorry for what I said. But I went away, everything was cleared. So if I didn't come back, there's nobody could say a bad thing about me. I'd apologised to those where I'd been wrong, and other people had said, well, yeah, I think more of you for doing that. And it was a big leveller, but I didn't want any ill feeling anywhere. And when I overran my time, I didn't get the train. I said, right, I'll have to get the car. The car's got to go. So in the car I drove 10 hours back to camp. I was there for the Monday morning, into the boss man's office, and then that was a really, really difficult time. So there's me. This is just preparing for war. That's not, we haven't even got there, and what do you do? So anyway, time goes on, everybody gets broken the news on the Monday morning at parade. I've already known for 3 or 4 days. Right, I'm ahead of the ball here. Corporal South, I want you to do this, this and this. I want you to get a car, and the commanding officer, his children were in school in Manchester, I remember. And he says, yeah, I'm going to give a presentation at the Manchester school where my children go, and I'm going to do this and go that, and I want you to drive me up there, and we're going up this afternoon. And it was like, wow, right, we're off. So I drove to Manchester, drove back, thought nothing of it. But you know that guy, commanding officer or not, he was driving all the way to Manchester to a private school where his children were in boarding school, giving a presentation about the army, and he was actually saying goodbye to his children. All undercover. And it was really, now in later life you think about it, you think, wow, I never seen that at the time, as you reflect on things. So anyway, obviously there's some guys whose wives wouldn't let them go. They were supposed to be leaving on the Friday, for instance, and we had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. Oh. So in the Land Rovers, the squadron was together and off we went. And I actually went, as we call it, south, and boarded HMS Fearless. And this was one of my real lessons in life, this. And what a place. So HMS Fearless was the command ship. Whole of the land forces were going to be commanded from here. Brigadier Julian Thompson, all the top guys were on there. And there's me, the guy that looked after Rod MacDonald. So anyway, goes to Falklands,
stopped off at Ascension Island, and I nearly died there through a silly accident. Nearly drowned in a vehicle that just couldn't swim. But anyway, we get to the Falklands, and there we are. Goes ashore. The firefight starts. The firefight is when you shoot at each other. We got on land. We didn't have much trouble in San Carlos water, and then we started moving out, and that's where the trouble came. Our first real trouble was in San Carlos water. So here's me signing off till our next meeting on South Asia TV. Thank you. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mixed some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well. I'm Rahila Ahmed. I'm a psychotherapist, a personality coach. We have decided to bring all of those tools and techniques that are scientifically proven. Mama, मुझे बहुत ज़्यादा stress हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा tension हो रही है. What are we going to talk about today? Now we have two different parts of our mind. One is the conscious mind and one is the subconscious mind. Moment to moment miracles are going to come in your life, and moment to moment healing and happiness is going to come to your life. And as I mentioned earlier, today we are going to talk about your health.
वेलकम टू सेटल अराउंड द वर्ल्ड। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा अहम रोल प्ले करता है किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन में। विजिटर वीज़ा किन लोगों को मिल सकता है और विजिटर वीज़ा पर हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये यहाँ पर देखना बड़ा ज़रूरी है कि वो किन लोगों को साथ लेके जाना चाहता है। आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम चुके है जिंदगी के भरे गुलिस्तान से खफा। जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है। दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. चेस ने आज़ादी बनाया है अपने प्यारों के साथ। साउथ एशिया ग्लोबल आप लोगों के लिए ला रहा है जिसने आज़ादी का तोहफा।
जिसमें पूरी दुनिया शरीक होगी, वो आपकी सेलिब्रेशन। आपको बस करना ही है अपने जश्न आज़ादी की तस्वीर और वीडियो हमें भेजें। हम आपकी वीडियोस और तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाएंगे। आए और पूरी दुनिया को दिखाएं हम अपनी आज़ादी का जश्न कैसे बनाते हैं। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. लाहौर इल्म अदब और सियासी सरगर्मियों का मरकज़ ही नहीं बल्कि लजीज खानों के हवाले से भी मशहूर है, जबकि लाहौरी अपनी जिंदा दिली और खुश खुराकी में भी अपना सानी नहीं रखते। लाहौर में सैकड़ों ऐसे मुकामात हैं जहां मुनफरिद, लजीज और शोहरत याफ्ता अशिया खाने को मिलती हैं। मछली, निहारी, हरीसा, सिरी पाए, टिक्के कबाब, मुर्ग चने, हलीम, मुर्गो मटन की कढ़ाई, पठूरे और दाल चावल समेत कई खाने अपनी इनफरादियत और जायके के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दस्तयाब हैं। लाहौर में गवाल मंडी की फूड स्ट्रीट, निस्बत रोड, बत्ती वाला चौक से मेन बाजार गवाल मंडी तक की सड़क के दोनों तरफ के गेट ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए जाते हैं और यूं शाम ढलते ही ये सड़क फूड स्ट्रीट में तब्दील हो जाती है। अंग्रेजों के दौर में यहाँ ज्यादातर गवाले आबाद थे जो अंग्रेजों की फौजी छावनियों में दूध फराहम करते थे, जिसकी वजह से ये इलाका गवाल मंडी के नाम से मशहूर हो गया। जब भैंसों को शहर से बाहर मुंतकिल किया गया तो गवाले भी यहाँ से चले गए। गवाल मंडी का इलाका फूड स्ट्रीट बनने से कबल भी लजीज खानों का मरकज समझा जाता था। खास तौर पर अमृतसर के मशहूर खाने हरीसा, निहारी, मगज, बोंग, सिरी पाए, देसी मुर्ग, मछली, बिरयानी, हलवा पूरी और लस्सी वगैरह खासे मकबूल हैं, क्योंकि क़याम पाकिस्तान के बाद अमृतसर से आने वाले मुहाजिरीन ने यहाँ रिहाइश इख्तियार की और ये इलाका अमृतसरियों का गढ़ बन गया। यहाँ के बहुत से खाने इनके दुकानदारों के नाम से मशहूर हो गए और लोग दूर दूर से खाना खाने के लिए यहाँ आने लगे।
दुकान 1947 में कायम हुई थी। इससे पहले लाहौर में सीख कबाब ही खाए जाते थे। नामवर सियासतदान, सरकारी अफसरान, अहम शख्सियात और उमरा यहाँ तिक्के खाने आते थे। अहम गैर मुल्की शख्सियात की लाहौर आमद पर सरकारी दावतों में यहाँ के तिक्के कबाब पेश किए जाते थे। गवर्नर पंजाब की हदायत पर जब तजदीदे लाहौर के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ तो खाने पीने की तहजीबी रवायात को उजागर करने के लिए इंतज़ामिया ने गवाल मंडी का इंतखाब किया। 15 मार्च 2000 को फूड स्ट्रीट के मंसूबे का आगाज़ हुआ और सिर्फ 7 माह के अरसे में फूड स्ट्रीट मुकम्मल हो गई और 20 अक्टूबर 2000 को इसका इफ्तिताह किया गया। फूड स्ट्रीट के दोनों अतराफ की दुकानों और मकानों की बालकनियों की नए सिरे से तज़यीनो आराइश की गई। पुराने मकानों की मुरम्मत करके इन पर खूबसूरत रंगो रोगन किए गए। बालकनियों के नीचे मुख्तलिफ रंगों की लाइटें लगाई गईं, जिनकी रोशनी में बालकनियां और झरोके नहायत दिलकश मंजर पेश करने लगे। जहां फूड स्ट्रीट कायम की गई है, वहां क़याम पाकिस्तान से पहले अमीर हिंदू मुकीम थे। पाकिस्तान बनने के बाद अमृतसर से आने वाले मुहाजिरीन यहाँ मुकीम हुए। चौक में अमृतसरियों ने 2 होटल खोल लिए, जहाँ रात गए गाहकों का रश रहता और फिल्मी गीत बजते रहते। एक होटल की बालाई मंजिल पर मारूफ दरवेश शायर सागिर सदीकी ने अमृतसर से हिजरत करके रिहाइश इख्तियार की। अमृतसर से हिजरत करके बहुत से अदीब और शायर गवाल मंडी में रिहाइश पजीर हुए और रात देर तक इनकी महफिलें जमती थीं। इस तरह ये इलाका पहले से ही अदबो सकाफत का गहवारा था। फूड स्ट्रीट बनने के बाद इसकी अहमियत में मजीद इजाफा हो गया है। फूड स्ट्रीट बनने से पहले यहाँ 30 से ज़ायद दुकानें खाने पीने की थीं, जबकि तकरीबन 50 दुकानें फोटोग्राफर, किराना मर्चेंट, तबीब, कुम्हार, जराह, हिजाम, पतंग फरोश, धोबी, बिजली के सामान और साइकिलें मुरम्मत करने वालों की थीं। लेकिन अब 80 से ज़ायद दुकानें रेस्टोरेंटों में तब्दील हो चुकी हैं। शाम को फूड स्ट्रीट के दोनों अतराफ लोहे के बड़े गेट बंद हो जाते हैं, जबकि मुल्हका गलियों के लोहे के गेट भी बंद कर दिए जाते हैं। यूं ट्रैफिक की आमदोरफ्त फूड स्ट्रीट में मुअत्तल हो जाती है और सिर्फ पैदल चलने वालों को ही रास्ता मिलता है। ये दरवाजे शाम से रात 2-3 बजे तक बंद रहते हैं। शाम होते ही मुख्तलिफ खानों के शौकीन फूड स्ट्रीट का रुख करते हैं। मुकामी लोगों के अलावा बैरूने मुल्क से आए सयाह भी कसीर तादाद में यहाँ आते हैं। गैर मुल्की सरकारी मेहमानों को भी यहाँ खास एहतमाम से लाया जाता है और तब यहाँ बैंड बाजे का भी इंतजाम किया जाता है और पंजाब के रवायती और सकाफती लिबास में मलबूस फनकार भी मौजूद होते हैं। फूड स्ट्रीट गवाल मंडी का चर्चा दुनिया भर में रहा। गैर मुल्की सयाह लाहौर आते तो फूड स्ट्रीट देखने की ख्वाहिश करते। रवायती खानों के अलावा चंगेर में रखी रोटियां, मट्टी की ठूठियों में खीर, मकई की रोटियां, साग और मक्खन सयाहों को बहुत मुतासिर करते हैं। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better.
Where it's legal and where it's contract, take your time. It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Fahrradfahren. हमारी पूरी कौम को इस वक्त डंडे मार के बलोचिस्तान भेजा जाए बहुत बढ़िया तरबियत में कहीं ट्रेनिंग में कमी होती है ये जो फॉरेन वाला काम ठीक नहीं होता. Ils ont encore un petit peu de boulot, mais ça va. Ils sont gentils, ils sont amoureux, c'est... I'm Rahila
Rahila Ahmed. I'm a psychotherapist, a personality coach. Hi, I'm Uma Malhotra, and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Hello, welcome to Yesterday, Today and Tomorrow here on South Asia Global Television with me, Robin Ashby. प्रोग्राम है जमत अफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। Hello and welcome to Business ABC. कि जी क्या हमें कोई इकोनॉमिक सेलिब्रेशन मुआशी निजात भी मिलेगी कि नहीं? देखिए जो सियासत है ना वो ख्वाबों की तजारत है। जो एंकर जितना चीखती है वो उतना फेमस हो जाती है। चीखने चलाने की जहाँ तक बात है, आई थिंक आई डोंट फाइंड इट गुड। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. कोई ऐसा बैट्समैन जिसको बॉलिंग करते हुए आप घबराते हो? पता है आप लोगों का जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है बाबर आजम है। आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम चूंकि है जिंदगी के भरे गुलिस्तान से खफा। जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है। दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor.
I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. This is Badge of Honour with Alan Curry. Once again, I appear to be talking about my role as a police officer. Recently, I took you up to the rank of Sergeant and I explained the rank structure. I'm now being promoted to the rank of Inspector and in charge of 20 officers in the West End of Newcastle upon Tyne, which is England, a very cosmopolitan area, but the skills required personally and professionally now change as you have responsibility for over 20 officers on a 24-hour basis when you're dealing with people who require your help. And sometimes we're working with young officers, older officers, but in that context, they are dealing with some significant issues. Beforehand, I was looking after myself. Now I'm looking after others. And we had some incidents which were very difficult. Sadly, people do seem to hit each other on a regular basis. We had an incident where somebody attacked another individual with a machete. The arm was severed, blood everywhere, and two young officers dealt with that professionally as an initially with the incident. But then, of course, once we deal with it afterwards, they also have their own personal issues to deal with. We had another incident with a chase with a car, would you believe, where a stolen car actually knocked over a pedestrian and killed them. Can you imagine the issues surrounding the problems that the officers have to deal with, both with securing the scene, managing the situation with the dead body, and then having to deal with the grief of the families afterwards? And all those sort of situations are accepted as a norm for police officers. And they deal with them and they're very professional, but then who looks after the professionals? And then sometimes that's where the rank and role of inspector comes in, not least of which managing the scene, but also managing your staff. And that's where you get the situation where leadership, management, and dare I say counselling skills come in. You know, I've done some courses that help, but in the meantime, it's a lot to do with the individual, the personality, and how you lead your team
and how your team both knows how to be professional, knows how to respect the role, but also knows they can have the support, understanding, and dare I say, even learning from some of the most significant and serious incidents that occur in the role of a police officer. We had another situation where it was raining very heavily and two officers were just driving past a block of flats, and would you believe the top flat was on fire? They ran into this burning building to carry an individual out because in the worst possible scenario, not only was the fire, the individual who owned that flat was incapacitated and unable to walk. So they had to carry this individual out. And I was there at the time and I know exactly what happened, in the sense that we were in a smoke-filled building. Now, if anybody's ever been in a building full of smoke and you hear about the sort of inhalation of the smoke, it's actually, I was going to say disgraceful, it's horrendous. We actually had the foresight to break windows, to put our head through the window to breathe. I've never really been in a situation like that. But once we've managed to save a life, we've managed to prevent other people becoming under any particular harm. We still have our debrief to understand when you go back to the station what we've just done, what's happened, and we're all smelling of smoke. It's an incredible feeling. So yes, we're professional, the officers are professional, they do the job, but as I keep saying, or I've said and I'm repeating myself now, who looks after the professionals? We need to manage their particular issues, and that's where sometimes it can be stressful situations. I'm not a great lover of saying stress. What I would say is we understand how to deal with challenging situations as professional adults doing a job, which goes back to one of the core themes of what I've been saying continually about policing. Our reason for being is to assist the community through all of the endeavours we go through. Sometimes they're because people have difficulties and we just help. Other times it's enforcing the law. Individuals sometimes don't mind us helping. They're not as keen sometimes when we enforce the law. But that's the way policing is, and with my own perspective, that's how I developed leadership, counselling, and a certain amount of management skills, which would hopefully allow me to progress maybe to the next rank, which we could discuss. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal and where it's contract, take your time. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफ़ी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते।
स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। आजादी की कहानी हमारी जुबानी। साउथ एशिया ग्लोबल टीवी लेकर आ रहा है आपके लिए बहुत ही मुनफरिद सेगमेंट। अगर आप किसी ऐसे हीरो को जानते हैं जिन्होंने तहरीक आजादी में हिस्सा लिया हो या उस अजीम जद्दोजहद को अपनी आंखों से देखा हो तो हमें लिख भेजिए। हम आपके हीरोज को पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। So if there's other learning involved as an inspector and you take on responsibility for other people, if we're talking in the context of a rank and in a hierarchical structure, what about the other side? Who looks after the inspector? Nobody ever thinks the inspector has the same issues as their staff, right? So I'm married, I've got 3 children and 2 grandchildren now. In fairness, yes, I still have the grandchildren were obviously very young when I was in the role. So I have to go home at night times, taking everybody else's problems, and that's not a problem in the context because that's why you aspire and create and move in the rank structure. But I then have to go home and be a husband, a father, a grandfather, and sometimes take on their problems. Now, it's an interesting perspective which I learned from others and from myself in the context that nobody ever thinks the person who is the leader or manager actually has a different life. The inspector or the manager can never have a bad day. So when I go home and my wife says, "Where have you been?" or "What's happening?" or "I've got to do the shopping," or "This painting needs to be done," or "The grandchildren are having a struggle," or "The children are struggling at home," their issues all over and above of being a police officer. But then I go back to work the next day after doing all those sort of things, and once again, every day is a daily crisis. We had a situation where we actually had a siege, would you believe, a local place. One of the local residents threatened to blow up a flat. We had a bottle of gas butane, and he was prepared to fire, would you believe, a gun at it to blow up the thing. Now, can you imagine? I've just left my family. My granddaughter's got problems at school.
My children are having issues. My wife wants the bin put out. And now I'm in charge of a situation, again, with more than 20 officers at this particular time, managing to talk somebody down from a situation of blowing up a block of flats. And in that context, what you do in the policing set, there's a straightforward side in the context with police negotiators. And we always keep the cells separate. When you've seen it possibly on the television or in some of the scenes where you have the negotiator, we keep the activities of the actual officers who are doing the job and securing the area totally away from the negotiators. And the way I was taught was commanders command, negotiators negotiate. And that took us over 15 hours to talk this individual out of the house. Now that's a totally different situation to just dealing. But this is the same individual as the inspector who has a family life and issues at home, has staff to look after, and then has to manage an incident, and hopefully, and this was successfully, to a conclusion over 16 hours. And then you go home. You might have to go to sleep, but that's reasonable. But then the next day, you're back up again, emptying the bins and taking the children to school. It isn't just all, I was going to say all beer and Skittles. It's a localism in the context of understanding the role, managing your home life, managing the role and being professional. These are all skills that you learn as you progress, both in age, maturity, family, and dare I say, within the organisation. चलिए हम और आप देखते हैं कि हुकूमतों में बैठे सियासतदानों की बातें इतनी मुश्किल क्यों होती हैं। क्या हुकूमती वादे आम पाकिस्तानी के फहम से बालातर नहीं होते? देखिए पहली बार एक अवामी नुमाइंदे को अरबाबे इक़्तिदार से आपकी बात करते हुए। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are.
मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के मारूफ शायर, कानूनदान, सियासतदान और तहरीके पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। इलामा इकबाल उर्दू और फारसी में शायरी करते थे और इस्लाम से ख़ुसूसी लगाव रखते थे। इनकी वफ़ात 21 अप्रैल 1938 को जावेद मंजिल में हुई थी। मज़ार इकबाल की सादा सी इमारत मुस्तकील शक्ल की है। इसका एक दरवाज़ा मशरिक और दूसरा जनूब की सिमत में है। मज़ार इकबाल पर सफ़ेद मार्बल भी लगा है। मज़ार की दीवारों पर इकबाल की किताब ज़बूर अजम से लिए गए इशार कुंदा हैं और इसके अलावा कुरानी आयात की कैलीग्राफी भी की गई है। मज़ार इकबाल के बाहर सरसब्ज़ टुकड़ियों में मुनक़सिम बाग भी है जो बहुत दिलकश और खूबसूरत है। मज़ार इकबाल की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर इसी नौयत का है जो मुग़ल शहंशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मकबरे की तामीर में इस्तेमाल हुआ है। And then, of course, you reflect on some of the things you've done, dare I say, positively and negatively. The world's a funny place when the criminality or the criminals are working. I remember being in a police car and there was you get a sixth sense about these things. And there's a car in front of me, in actual fact, that didn't seem right. So I turned around. Obviously, with a police car, you've got the blue lights. I put the blue light on to try and indicate the car to stop. And it was away. And when I say away, it just drove away fast. So you won't know the location I'm talking about, but the bottom line is I'm chasing now a car. For whatever reason, I don't know, but obviously something's not right. It could be a criminal coming home from a burglary, something not right in the car itself, maybe a drunken driver. One thing led to another, and we go towards where a dual carriageway is. So if you can assume the traffic is travelling north, this car went down the slip road and travelled south against the northbound traffic. Now this is where, as a police officer, you kick in, but sometimes you do some stupid things. So I'm now chasing a car down a road against the road traffic. Now it was 2 o'clock in the morning, so fortunately there wasn't a lot of traffic, and my viewpoint was I knew what I was doing, and if I get a car coming the other way, and I don't know how I thought like this, but basically I would put the police car up the verge and turn it over so I didn't have a head-on crash. As it happened, we only went about half a mile before this car went off the slip road, and the driver went down a further road and actually crashed. And one of the strangest things I always remember, the driver, young lad, jumped out with his dog, and the next thing I know, I'm chasing an individual and the dog. Bottom line was, it turned out when I eventually caught him, because I did, it was a stolen car. Now I'm a dog lover, but the last thing I expected was to be chasing a person who'd stolen a car and had their dog. How does that happen? These are just some of the strange things you come across. I mentioned before about knives and machetes. We went to a situation once where a domestic situation between man and wife, and would you believe a number of murders take place within the family. The wife had stabbed the husband,
And as a consequence, I ended up having to put my hand, and we just did these things to stop the bleeding until the ambulance turned up. I managed to save that individual's life. Never expecting that I'd be turning up at work to do something as similar as that. And then the other thing about those it's strange, you could say they're exciting, professional, I'm not quite sure how you describe them. I would say it's how you do the job, but it's amazing. If you're a member of the public, you see a police car. As a police officer, you see an awful lot of life differently. And of course, the other sad thing is, sometimes you're called to situations where people haven't been seen for a long time. I went to a flat locally, and there's a strange thing about where people haven't been seen and people have died alone. And there's something about death where you smell it more than you see it. So as a consequence, once you look through the letterbox, you've got that horrible smell of death. We eventually broke into the flat, and the individual had been lying there for 3 weeks. And I don't know whether this is too graphic or not, but can I just say, it's amazing how maggots turn up where there's a dead body. Let's not go into too much more than that. So all of these situations arise within the police service. Now I'm explaining those are some of the things I did as an inspector and turning up in charge of those situations. But of course the other one, as I've already maybe related to, is sometimes my younger members of the staff have some potential problems with these issues till we talk them through. And that's what makes, hopefully, the leadership style of the inspector, managing the individuals within their responsibility and the legacy of ensuring they become better police officers for doing their job now, for being better in the future, and turning in tomorrow's potential leaders to carry on the ethos of policing and responsibility and community service. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor. I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. प्रोग्राम भी करंट अफेयर्स के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। एक सरेदस्त जो मसला दरपेश आया वो तो गंदम का स्कैंडल है। 22 अक्टूबर 2023 को कमेटी जो है कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दी जाती है कि जी हम गंदम उगाएं। आप जो कोई भी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से मुल्क के अंदर ना आप टैक्स लगा सकते हैं, ना आपके पास टैक्स कलेक्शन है। ये है कि यहाँ तो अपनी आप जातियात की सियासत कर दें। ठीक है, ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज के, अमेरिकन और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के फुटप्रिंट्स मौजूद है। हमारी जो मिनिस्ट्री है प्लानिंग की, उसमें कैपेसिटी भी नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की। चौदह अगस्त के मौका पर इंटेलिजेंस आपको दे रहा है आजादी ऑफर और इसमें हम आपको दे रहे हैं 20% फ्लैट डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज और इसके अलावा पहले आने वाले 20 बच्चों को 77% डिस्काउंट देंगे टिल 14 अगस्त तक। हम अपनी शान से तेरे नाम करते हैं, ए वतन अजीम हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। आप सबको इंटेलिजेंस की तरफ से योम आज़ादी मुबारक हो। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए 77 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम आईटी की फील्ड में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान को आईटी की फील्ड में आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान में इंटेलिजेंस अदारा आपके लिए मौजूद है। इंटेलिजेंस आपको आईटी के वो कोर्सेज ऑफर कर रहा है जिनको करने के बाद आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इन कोर्सेज में शामिल है डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, अमेज़न, वर्डप्रेस, पाइथन, मीडिया प्रोडक्शन एंड फिल्म मेकिंग कोर्स। तो आज ही आइए और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम चुके है जिंदगी के भरे गुलिस्तान से खफा।
का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंध वारा जियन सिंध को। निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले जिस्म जां बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें। मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फराक में यूं सुबह शाम करते हैं। गर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं। गर आज औज पे है ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। I'm Rahila Ahmed. I'm a psychotherapist, a personality coach. We have decided to bring all of those tools and techniques that are scientifically proven. मामा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है. What are we going to talk about today? Now we have 2 different parts of our mind. One is the conscious mind and one is the subconscious mind. Moment to moment miracles are going to come in your life, and moment to moment healing and happiness is going to come to your life. And as I mentioned earlier, today we are going to talk about your health.
आलम से बिगड़कर शाह आलमी के नाम से मशहूर हो जाने वाला ये दरवाज़ा लाहौर की मसरूफ़ तरीन और मालियाती लिहाज से बहुत मारूफ मार्केट के करीब वाक़या था, ताहम ज़माने के दस्तबर्द के नतीजे में ये मुनहदिल हो चुका है। शहर कदीम के जनूब की सिमत मोची दरवाज़े और लोहारी दरवाज़े के दरमियान शाह आलमी दरवाज़ा वाक़या है। इस दरवाज़े का नाम औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे शाह आलम पर रखा गया था, जो कि पंजाब में अपनी सखावत की बिना पर बहुत मारूफ था, जबकि इस दरवाज़े का पुराना नाम भेड़ वाला दरवाज़ा था। बरे-सगीर की तकसीम के दौरान इसे जला कर खाक कर दिया गया और अब सिर्फ इसका नाम ही बाकी रह गया है। ये दरवाज़ा मुग़ल दौरे हुकूमत में तामीर किया गया और ये अंदरून शहर के रास्तों पर तामीर शुदा 13 दरवाज़ों में से एक है। ये दरवाज़ा भी अंग्रेज़ी अहद में दीगर दरवाज़ों की तरह पुराने अंदाज़े तामीर में 1892 से कबल छोटी ईंटों से तामीर हुआ और इसमें चूने का मसाला इस्तेमाल किया गया। क़याम पाकिस्तान के वक्त अंदरून शहर के इस हिस्से में ज़्यादा लूट मार हुई, इमारतों को आग लगा दी गई, बड़ी बड़ी इमारत ईंटों का ढेर बन गईं। क़याम पाकिस्तान के बाद शाह आलमी दरवाज़े को गिरा दिया गया। अंदरून शाह आलमी दरवाज़ा मलबा साफ करके कदरे खुली और बड़ी इमारत बना दी गई, जो आज गैर मुल्की अशिया की सबसे बड़ी मंडी है। क़याम पाकिस्तान से पहले शाह आलमी दरवाजे के अंदर हिंदू अक्सरियत की आबादी थी। तमाम कारोबार इनके हाथों में था और बाजार इतने तंग थे कि वहाँ से पैदल गुजर मुश्किल से होता था। अलबत्ता उस दौर में भी ये इलाका तिजारती मरकज़ की हैसियत रखता था। जिस इलाके में ये दरवाज़ा वाक़या है वो तारीखी लिहाज से इंतहाई अहम है और यहाँ कई यादगारें, हवेलियाँ और कदीम बाजार वाक़या हैं, जिनमें रंग महल, सोहा बाजार, कनारी बाजार वगैरह काबिले जिक्र हैं। एशिया की नंबर 1 क्लॉथ मार्केट आज़म क्लॉथ मार्केट भी इसी इलाके में वाक़या है। इसी तरह सुनहरी मस्जिद और ऊंची मस्जिद जैसी तारीखी मसाजिद भी इसी दरवाजे के पास वाक़या हैं। शाह आलम मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, नायाब अशिया, स्टेशनरी, क्रॉकरी, खेलों के सामान, ज्वेलरी और ज़रूरियाते ज़िंदगी के दीगर सामान के लिए मशहूर है। इस मार्केट में अंदाज़न 1200 के करीब दुकानें हैं। शाह आलम मार्केट से ज़रूरियाते ज़िंदगी की अशिया तमाम मुल्क में और हमसाया मुमालिक को दरामद की जाती हैं। ऐनक मार्केट शाह आलम दरवाजे में वाक़या है। ये मार्केट 1970 में कायम हुई। इस मार्केट में 120 के करीब दुकानें हैं। इसके अलावा इर्द गिर्द के इलाका में दर्जनों ऐनक फैक्ट्रियां और गोदाम भी मौजूद हैं। आज
आज शाह आलमी दरवाजे का इलाका शहर कदीम के दीगर दरवाज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये गुमान भी नहीं होता कि कभी यहाँ पर शहर लाहौर का तारीखी दरवाज़ा हुआ करता था। अब इस दरवाजे का फ़कत नाम ही रह गया है। ये भी हकीकत है कि जिन लोगों ने ये दरवाज़ा देखा था वो यहाँ से गुजरते हुए इसके आसार ढूंढने के लिए कुछ अरसा ज़रूर क़याम करते थे, बल्कि इनके पाँव खुद ब खुद यहाँ रुक जाते थे। शाह आलमी दरवाजे के अंदर दाखिल हो तो एक कुशादा सड़क दिखाई देती है। तिजारती मरकज होने की बिना पर यह सड़क तजावुजात और ट्रैफिक से भरी रहती है। इसके बाएं जानिब पापड़ मंडी का बाजार शुरू हो जाता है और मत्ती चौक तक पहुंचता है, जहां छापा स्ट्रीट और चौक मत्ती बाजार के रास्ते भी आपस में मिलते हैं। शाह आलमी दरवाजे की मरकजी सड़क पर आगे बढ़ें तो मच्छी हट्टा बाजार से शुरू होते हुए रंग महल चौक पहुंच जाते हैं। बैरून शाह आलमी दरवाजे से रंग महल तक का सारा इलाका बैनुल-अक़वामी तजारती मरकज की हैसियत रखता है। ये इलाका जेवरात से लेकर गारमेंट्स, क्रॉकरी, ग्रोसरी, मट्टी के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, बच्चों के खिलौने, दफ्तरी और घरेलू इस्तेमाल की अशिया की बड़ी मंडी है। रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया यहाँ दस्तयाब हैं। तिजारती एतबार से रंग महल का इलाका निहायत अहमियत का हामिल है और ये इलाका सुबह से रात गए ट्रैफिक और लोगों के हजूम से भरा रहता है। यहाँ ख़वातीन की दिलचस्पी के बाज़ार यानी सोहा बाज़ार, कनारी बाज़ार, गमट्टी बाज़ार और डिबी बाज़ार भी मौजूद हैं। अंदरून शाह आलमी दरवाजे में सोने के जेवरात के हवाले से मशहूर सोहा बाज़ार भी मौजूद है। सोहा बाजार की तंगो तारीक गलियों में सैकड़ों सनियारे कबल अज तकसीम से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। दुकानों पर सजे सोने के जेवरात और बड़ी बड़ी रोशनियों की वजह से ये बाजार दुल्हन की तरह सजा दिखाई देता है। इसके साथ ही कनारी बाजार मौजूद है। जो खास तौर पर ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। ये बाज़ार गोटा कनारी और ख़वातीन के इस्तेमाल की दीगर अशिया के हवाले से शोहरत रखता है। ख़वातीन शादियों की खरीदारी इसी बाज़ार से करना पसंद करती हैं। इसी इलाके में खुस्सा, पिशावरी चप्पल और कोल्हापुरी चप्पल की भी बेशुमार दुकानें हैं। दूसरी जानिब गमट्टी बाजार और डिबी बाजार हैं जो चूड़ियों के लिए मशहूर हैं। मजमूई तौर पर ये सारे बाजार ख़वातीन की दिलचस्पी का सारा सामान मुहैया करते हैं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you
the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash, so I used the London lash. निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जां बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फराक में यूं सुबह शाम करते हैं। गर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं, गर आज औज पे है ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। जिसने आज़ादी बनाया है अपने प्यारों के साथ। साउथ एशिया ग्लोबल आप लोगों के लिए ला रहा है जिसने आज़ादी का तोहफा, जिसमें पूरी दुनिया शरीक होगी वो आपकी सेलिब्रेशन। आपको बस करना ही है अपने जिसने आज़ादी की तस्वीर और वीडियो हमें भेजें। हम आपकी वीडियोस और तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाएंगे। आए और पूरी दुनिया को दिखाएं हम अपनी आज़ादी का जश्न कैसे बनाते हैं। प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। एक सरेदस्त जो मसला दरपेश आया वो तो गंदम का स्कैंडल है। 22 अक्टूबर 2023 को कमेटी जो है कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दी जाती है कि जी हम गंदम उगाएं। आप जो कोई भी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं। मुल्क के अंदर ना आप टैक्स लगा सकते हैं, ना आपके पास टैक्स कलेक्शन है। ये है कि यहाँ तो अपनी आप जातियात की सियासत कर दें। ठीक है, ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज के, अमेरिकन और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के फुटप्रिंट्स मौजूद है। हमारी जो मिनिस्ट्री है प्लानिंग की, उसमें कैपेसिटी भी नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की।
Fahrradfahren. हमारी पूरी कौम को इस वक्त डंडे मार के बलूचिस्तान भेजा जाए। बहुत बढ़िया। तरबियत में कहीं ट्रेनिंग में कमी होती है। ये जो फौरन वाला काम ठीक नहीं होता। Ils ont encore un petit peu de boulot, mais ça va. Ils sont gentils, ils sont amoureux, c'est... I'm Rahila Ahmed. I'm a psychotherapist, a personality coach. Hi, I'm Uma Malhotra, and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Hello, welcome to Yesterday, Today and Tomorrow here on South Asia Global Television with me, Robin Ashby. प्रोग्राम है जमत अफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। Hello and welcome to Business ABC. कि जी क्या हमें कोई इकोनॉमिक सेलिब्रेशन मुआशी निजात भी मिलेगी कि नहीं? देखिए जो सियासत है ना वो ख्वाबों की तजारत है। जो एंकर जितना चीखती है वो उतना फेमस हो जाती है। चीखने चलाने की जहाँ तक बात है, I don't find it good. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. My name is Terence South. I formerly served in the British Army.